हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ मेथी स्ट्रिप। इस वीडियो में हम मेथी का पट्टी कैसे बनाते हैं इसका थोड़ा विवरण है। आप थोड़ी मेथी को ऐसे टेबल पे डाल दीजिए, फ्लैट सरफेस पे। पुट सम मेथी ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस। यूज़ अ पेन और एनी पेन लाइक material to spread the methi on the table in one single line. Okay, so you can just move it like this, and at the end move it like this so that it comes in one single line, and if there is anything extra you can remove it. जो भी एक्स्ट्रा हो इसको रिमूव कर सकते हैं और ऐसे एक सिंगल लाइन पे मेथी आएगा, और उसको आप ऐसे पेपर टेप से चिपकाना है। ये हाफ इंच का पेपर टेप है, दिस इज एन हाफ एन इंच पेपर टेप। सो टेक अ पीस ऑफ इट, so stick the paper tape at one end of the methi and gently move it downwards and gently press so that all the methis get stuck to the paper tape. ऐसे मेथी को जेंटली दबाएंगे तो सभी पेपर स्ट्रिप को चिपक जाएगा, तो एंड यू विल गेट ऑलमोस्ट अ परफेक्ट मेथी स्ट्रिप वेयर इट इज़ इन वन सिंगल लाइन। एंड इसमें थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ हो तो उसको आप सीधा कर सकते हैं। सो एंड इफ देर इज़ एनी डबल मेथी विच हैज़ कम, सो यू कैन ऑलवेज अलाइन इट into one single methi strip, and you will have to apply these things on your finger joints. So we have 3 joints on the 4 fingers and just 2 joints on the thumb, and our joints are not exact circles, it is slightly moved. So if you hold your finger like this, so you can see that the joint is not straight, it is at an angle. ये joint जो है ये सीधा नहीं है, थोड़ा एंगल पे है, ऐसे और ऐसे। तो इसलिए जब भी हम मेथी को डालते हैं, so whenever we put methi, so we make sure that we put at a slight angle, okay, and hence we always start putting methi from the outer side of the joint on this side. So we put it like this and stick it over here and bring it on this joint, and any methi which is extra. So there are some extra methi seeds, so we will remove those extra methi seeds. So that there is a proper circle. So this is how we put the methi strip on a joint. And an exception to this is on the lower joints, because the line is over here and the joint is over here. So there is a gap of this much. So only in these 4 joints we will directly put on the line. So क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा है इसलिए हम इसको ऐसे सीधे ही लगा देंगे। बस ये 4 उंगलियों की नीचे की जो जॉइंट है वहाँ पे हम इसको ऐसे नीचे लगा देंगे। So but in this I will have to add some more seeds because the joint is slightly thicker than this. So this joint is thin, this is thicker, and this is more thick. Okay, but in thumb also, but in thumb it is on the same line, so we don't have to worry about that. Okay, I hope this helps in understanding on how to prepare a methi strip and also how to apply a methi strip. Thank you very much.